स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनीता कोठारी। हम लोगों ने इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से शुरू किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस लिए थे और हमने वेरियस टाइप के ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेनली दो तरह के ट्रांजिशन शो करते हैं, एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे डी ट्रांजिशंस एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, राइट। सो नंबर 1 इज द डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द हेक्साएक्वो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स 3 ion. Here the oxidation state of titanium is +3. That means it is having only one d electron. Okay. Since it is an octahedral complex, the splitting pattern is like this. T2g orbital is of lower and less energy as compared to the Eg orbital. This unpaired electron is present in T2g orbital, which get excited to Eg orbital by the absorption of energy. Okay. So this electron get excited into Eg orbital from T2g to Eg orbital. During this process, this absorbs energy in visible region. That's why this is known as dd transition. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू द अदर डी ऑर्बिटल, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि डी संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन है एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाते हैं और इस प्रोसेस में वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और जो एनर्जी जनरली वो जो एब्सॉर्ब करते हैं इट इज फ्रॉम द विजिबल रेंज, यानी दृश्य क्षेत्र से वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम पे एब्सॉर्ब करता है। द करस्पॉन्डिंग कलर ऑफ द लाइट इज येलो एंड ग्रीन, ओके, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट कलर इज ब्लू एंड रेड, विच कंबाइंस to give violet color to this complex, right? So it must be clear to you, in dd transition the transition of electron take place within a set of d orbital of the same metal from one d orbital to another d orbital, right? And during this process it absorbs energy from the visible region, यानी इस प्रोसेस में वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं वो विजिबल रीजन से करते हैं, राइट। नाउ कम टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ओके। तो लिसन केयरफुली, इन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आइदर फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू द लिगेंड ऑर्बिटल और फ्रॉम लिगेंड ऑर्बिटल टू द metal orbital. Try to understand the point what I am telling you. In charge transfer transition, the transition of electron take place from either from metal to the ligand or from ligand to the metal. On this basis, I can divide charge transfer transitions into two categories. Number 1, ligand to metal charge transfer, and number 2, metal to ligand charge transfer. Metal to ligand चार्ज ट्रांसफर, ओके। तो आप हम इसको क्लियरली पढ़ लेते हैं, बट इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट हियर द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, दैट इज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू द लिगेंड ऑर्बिटल और आइदर फ्रॉम लिगेंड टू द मेटल ऑर्बिटल, राइट। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, so more energy is required. That's why such type of transitions generally take place in ultraviolet region. Note that point. In dd transition, what I told you, since transition of electron take place within a set of d orbital and hence less amount of energy is required because it is a set of the same metal ion, okay. So less amount of energy is required. That's why such transitions appears in visible region, whereas in case of the charge transfer transition, since electron get excited from metal to ligand or either from ligand to metal, so it requires more energy. So such type of transitions generally take place in ultraviolet region, okay. Now come to ligand to metal charge transfer transition, okay. Here one point must be clear to you, that since electrons are excited from metal to ligand orbital, yeah, electrons are transferred from metal to ligand orbital. So whenever there is a transition from ligand to metal, remember ligand must have
filled orbitals. What I am telling you? Ligands must have filled orbital and metal should have vacant orbital. Got it? Why? Because the electron from the filled orbital of ligand is transferred to the vacant orbital of metal. Similarly, you got it? Whenever there is metal to ligand charge transfer, then the electrons are transferred from the filled orbital of metal to the vacant orbital of ligand. Okay? So first we come in detail with the ligand to metal charge transfer. One of the most important and well-known example of such type of transition is that is ligand to metal charge transfer is potassium dichromate and KMnO4. These are the well-known examples which shows ligand to metal charge transfer, right? Here you see that here chromate is present in this form and this potassium permanganate in this form, and the oxidation state of chromium is here +6 and here manganese oxidation state is +7. Okay, so since the oxidation state is here +6 and +7, so we know that both are having no d electrons, right? यानी इन दोनों ही मेटल्स के पास में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट? तो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि दीज मेटल्स आर हैविंग व्हाट? वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट? अब आप यहां देखिएगा, हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ओके, एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज हैविंग फिल्ड पी ऑर्बिटल. क्या है इसके पास बताइए? फिल्ड पी ऑर्बिटल इसके पास में प्रेजेंट है. तो ऑक्सीजन की तो फील्ड पी ऑर्बिटल हो गई, मेटल की हो गई वेकेंट डी ऑर्बिटल. ओके, तो क्या हुआ देखिएगा आप, ये सपोज ये मैग्नीज है, ओके, तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इट इज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड ऑक्सीजन अपना फील्ड पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डाल देती है. सो देखिएगा आप, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है. That's why such type of transitions is known as ligand to metal charge transfer. Okay. Now, here this point must be noted that if we increase the oxidation state of metal, what I am telling you, see it clearly. If I increase the oxidation state of metal, then charge transfer process becomes easy. Try to understand this point. Since ligand is transferring its electrons to metal, if I increase the oxidation state of metal, then this metal will attract the electron from ligand more strongly. Okay? तो जब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूती से अपनी तरफ खींचेगी, या हम ये कह सकते हैं लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर कब फैसिलिटेट होगा, जब हम मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देंगे. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन इज टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, chromium 6 and magnesium 7. Here you see clearly that all these metals are having no d electrons. There is no d electron, right? But the charge is continuously increasing. That is the oxidation state of metal is increasing, and hence the intensity of color is also increased in the same order. Intensity of color also increases as the oxidation state. You see that this metal titanium +4 is colorless. इसका कोई रंग नहीं होता है. Whereas vanadium 5 is yellowish in color. Okay. Chromium 6, you know that potassium dichromate, dark orange in color, and magnesium 7 is violet in color. ओके, तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी ओर खींचती है, और इस तरह से जो चार्ज ट्रांसफर है वो बहुत इजी होता है, और यही कारण है कि रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाती है. राइट, इसके बिल्कुल सेम ऑपोजिट पॉइंट आप जरा सोच के देखिएगा. अब अगर यहाँ तो मैंने मेटल की बात करी, अब अगर सपोज मैं लिगेंड की बात करती हूँ, ओके, तो आप क्या बोलेंगे देखिएगा कि जैसे जैसे मैं लिगेंड का विद्युत ऋणता को कम करूंगी, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ आई डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड, ओके, देन
चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल इज फैसिलिटेटेड। फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं क्या बोला आपको मैंने कि अगर मैं जो लिगेंड है उसकी विद्युत ऋणता को कम कर देती हूँ तो वो लिगेंड क्या करेगा, आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, मेटल को दे देगा, और मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। तो अगेन रंग की तीव्रता इसी दिशा में बढ़ेगी। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मैं आपके सामने ला रही हूँ और वो है दैट इज दिस इज द कॉपर कॉम्प्लेक्स। ओके, हियर यू सी दैट दिस इज द CuCl4 2- complex. Okay, so this complex is blue in color, right? Now I replace this chlorine with bromine. Okay, that is Br4 2-, right? तो आप क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड लिया है। साइज ऑफ ब्रोमाइड इज मोर देन द साइज ऑफ क्लोराइड. ओके, सो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस. ओके, and since it is less electronegative, so it can easily give it electron pair to metal, that is copper. Okay, यानी चार्ज ट्रांसफर इसमें आसानी से हुआ और यही रीजन है इसकी कलर की इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. The color of this complex is little bit darker, or I can say that it is dark blue in color. Got it? Now, see here, chlorine is more electronegative as compared to bromide. Okay. Now, bromine is more electronegative as compared to iodide. तो अगर मैं इस ब्रोमाइड को, क्या बोला मैंने, कि अगर मैं इस ब्रोमाइड का रिप्लेस आयोडाइड से करना चाहूँ तो क्या होगा, जरा सोचिए. What will happen? Since iodine is bigger in size, it is less electronegative, so it can easily donate its electron pair to copper +2. Okay? क्या वर्ड बोला मैंने कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से कॉपर +2 को दे देगी, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से कॉपर +2 को देगी तो हम ये क्या कहेंगे कि ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी. और किस तरह से होगी आप देखिएगा कि इसमें आयोडाइड ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, कॉपर को दे दिया. सो कॉपर +2 गेट रिड्यूस्ड इनटू क्यूप्रस Cu+1 एंड आयोडीन गैस इज लिबरेटेड. ओके, तो आप ये देखिए, this leads to the complete oxidation reduction reaction. So this is about the ligand to metal charge transfer, यानी जिसमें ligand अपनी भरी हुई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल की खाली ऑर्बिटल्स में.